एवरीवन, दिस इज पार्ट 2 ऑफ कंजंक्शंस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और इस वीडियो में हम देखेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड कोरिलेटिव कंजंक्शंस। सो यस, वेलकम बैक टू रीमा मैम स्पोकन इंग्लिश क्लासेस एंड लेट्स जस्ट बिगिन। ओके, सो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस रीजन, टाइम, कंडीशन या फिर कॉन्ट्रास्ट बताते हैं। बिकॉज, ऑल्सो, इफ, बिफोर, आफ्टर, सिंस, ऑल्दो, ये सारे वर्ड्स सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। फर्स्ट इज बिकॉज। बिकॉज हमें कारण बताता है, रीजन बताता है। आई एम शूटिंग द वीडियो बिकॉज आई वॉन्ट टू हेल्प यू। आई एम डूइंग माई होमवर्क बिकॉज टीचर हैज गिवन मी द होमवर्क। ऑल्दो कॉन्ट्रास्ट बताता है। Although I was sick, I shooted the video. Although it was raining, he went for the interview. So although हमेशा सेंटेंस के आगे लगेगा, दो पार्ट में होगा और दोनों पार्ट के बीच में क्या होगा, कॉमा होगा। if कंडीशन देता है, फॉर एग्जाम्पल, if you watch the video, you will gain some knowledge. If you want my help, then just let me know. Next is when क्या बताता है, टाइम बताता है। Example, when you finish your video, you can replay it. Example, when you go to the zoo, don't harm the animals. After sequence बताता है, एक एक्शन के बाद दूसरी एक्शन कंप्लीट हुई है, ये बताता है। For example, after the meeting, we went to dinner. After I watched part 1, I again watched part 2. Before मतलब इससे ये एक्शन के पहले वाली एक्शन। For example, before having dinner, wash your hands. Before watching the video, take notes. Like take out a book and start taking notes. While मतलब कि उस दौरान, तो next है while, उस period में। While listening the music, I was taking notes. While shooting the video, I was not doing anything else. And last is since. Since it was late, we left. थर्ड पार्ट इज को-रिलेटिव कंजंक्शंस। जैसे नाम ही बताता है, को-रिलेटिव मतलब कि ये हमेशा पेयर्स में आते हैं, जैसे कि ईदर और, नीदर नॉर, बोथ एंड। ठीक है, लेट्स जस्ट स्टार्ट एग्जांपल्स ऑफ इट। सो बोथ एंड, बोथ राज एंड रवि आर माय फ्रेंड्स। बोथ ऑफ देम आर स्टडीइंग राइट नाउ। तो दोनों की बात हो रही है, दोनों ये चीज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज ईदर और। ईदर और चॉइस देता है, either come now or go later. Either order a pizza or a burger, but at least order one, so it's giving a choice. Neither nor. Neither nor भी चॉइस देता है either और की तरह, लेकिन ये नेगेटिव चॉइस होती है। जैसे कि you are getting neither ice cream nor chocolate. Neither Ram nor Ravi came to the party. Not only but also. Not only but also ज्यादा emphasis देने के लिए काम आता है। For example, she is not only beautiful but also intelligent. She does not only speak English but also French. Whether or, alternative situations के लिए, whether it rains or not, I will go. Whether views are there or not, I will shoot the video. Now it's time to practice. सबसे पहले मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आप उसके आंसर्स कमेंट में करोगे और बाद में मैं उसके आंसर्स यहीं पे बता दूंगी। क्वेश्चन नंबर 1, I was hungry dash I ordered pizza. So the correct answer is so. I was hungry, so I ordered pizza. Second, I stayed home dash it was raining. So the answer is I stayed home because it was raining. बारिश हो रही थी इसीलिए मैं घर पे रुकी। Question number 3, tea dash coffee and the correct answer is tea और कॉफी। चॉइस है ना, टी चाहिए या फिर कॉफी चाहिए, दोनों मत बोलना। क्वेश्चन नंबर 4, डैश यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें सक्सेस मिलेगी। फिफ्थ, शी इज डैश स्मार्ट डैश इंटेलिजेंट। द करेक्ट आंसर इज शी इज बोथ स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। वो दोनों है, स्मार्ट भी है, इंटेलिजेंट भी है। तो कमेंट में बताइए 5 में से आपके कितने सही हुए। और आप इस तरह के और कंजंक्शंस का पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो भी आप कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। कंजंक्शंस लिंकिंग वर्ड्स है। लिंकिंग वर्ड्स मतलब कि ब्रिज की तरह ये कनेक्ट करते हैं दो सेंटेंसेस या फिर दो वर्ड्स को। और 3 टाइप के हमने कंजंक्शंस देखे,
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोरिलेटिव कंजंक्शंस एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, और उसके बहुत सारे हमने एग्जांपल्स भी किए हैं। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो यू विल सपोर्ट मी थ्रू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।